एआई समिट के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। हर कोई क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहा है, जो लगता है यार बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक डिस्ट्रप्शन ला सकता है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो है उनको ख़त्म कर सकता है। तो उसका जो है सैंपल कैसा दिखता है, चलो मैं वो आपको दिखाता हूँ। और जापान के पवेलियन के अंदर ये सैंपल ऐसा लगता है। थोड़ा समझाता हूँ आपको। ये इसकी चिप है, जो समझ लो एक तरह से ये मेन चीज़ है और सारा फंक्शन यही करती है। और ये जो पाइप्स दिख रहे हैं आपको, ये एक तरह से रेफ्रिजरेशन का काम करते हैं। इसको ज़रूरत होती है कूल डाउन करने की। Like a mock-up or a smaller prototype of the actual quantum hardware which Fujitsu has developed in collaboration with RIKEN. So this is a 64 qubit quantum hardware, and the qubit part or the chip part of it, which is called the quantum processing unit. So you can see it in the reflection here. So there is a copper colored plate that sits that you can see from the reflection. So that is the quantum processing unit, which is 64 physical qubits. So this is from a couple of years back, and last year Fujitsu has scaled it to 256 physical qubits, and this year the plan is to scale further to 1000 physical qubits. And whatever you see above, the full structure, it is called the dilution refrigerator. Okay, dilution. And this what the main purpose of it is the superconducting. So the QPU, quantum processing unit, is based on superconducting technology, and for the operation of it you need a temperature close to absolute zero. And this thing, what it does is it brings down the temperature close to absolute zero at different levels. Okay. So you can see from here as well. So we start with 4 Kelvin, and at different levels it is brought down to 20 millikelvin. And the QPU, superconducting QPU, it works at 20 millikelvin. And so you can also see different wires passing through it. So a section of wires is used for the refrigeration purpose, and then the other section we can also pass electric signals, electromagnetic pulses through it. And if you see the QPU, there are wires connecting the QPU as well. Yes, so the copper colored wires. Yeah, and the electromagnetic pulses are used to do different operations on that qubit, on that qubits in the qubit. तो भाई ये सैंपल है और आने वाले टाइम के अंदर क्या डिस्ट्रप्शन ला सकता है, यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड इमेजिन।